Question number 4. This question is from coordinate geometry. Two points A and B have coordinates -1, 1 and 3, 4 respectively. The line BC is perpendicular to AB and intersects the x-axis at C. Part first of this question is find the equation of BC and x coordinate of C. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में जब डायग्राम फिगर बनी हुई नहीं होती क्वेश्चन में, तो अब आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करके तो पहले आपने एक स्केच बना लेना है. दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. दिस डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1 और बी इज 3, 4. -1, 1 जो है वो हम -1 इज दिस और 1 इज हेयर. लेट वो पॉइंट आएगा -1, 1. We locate A point here. This is A point. B is 3, 4. Let 3, 4 is in the first quadrant. 3, 4 is here. AB is a line. Now line BC is perpendicular to AB. BC लाइन बनाएंगे perpendicular to AB. BC लाइन फिर हमारे पास यहाँ बनेगी. Let this line is BC. And intersects the x-axis at C. ये लाइन x-axis को C पे इंटरसेक्ट करती है. जिसका इसका मतलब है कि ये पॉइंट C होगा. दिस पॉइंट इज C point and this angle is 90. Now we have to find the equation of this line BC. BC लाइन फाइंड करने के लिए पहले हमें ग्रेडियंट चाहिए और पॉइंट चाहिए. ग्रेडियंट जो है हमारे पास आएगा, पहले इस ए बी का ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे. ए के कोऑर्डिनेट है -1, 1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, 4. तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड कर लें और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो बी सी का ग्रेडियंट आ जाएगा. और पॉइंट हमारे पास बी ऑलरेडी है, तो इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड कर लेंगे. Now gradient of AB, gradient m, small m represents gradient. Gradient of AB जो है वो आएगा 4 - 1 y2 - y1 over x2 - x1. That is 3/4. Gradient of BC क्या होगा? Negative reciprocal of 3/4 because ये जो BC line है that is perpendicular to AB. ग्रेडियंट ऑफ BC इज इक्वल टू -4/3 और पॉइंट हमारे पास जो है वो गिवन है, दैट इज पॉइंट B 3, 4. नाउ इक्वेशन ऑफ BC विल बी इक्वेशन ऑफ BC y - y1 is equal to m into x - x1. This is a straight line equation.
y माइनस वाई वन, ये x1 y1 जो है ये पॉइंट है x1 y1 और gradient is -4/3. So putting the values we get y minus 4 is equal to -4/3 x minus 3. By cross multiplying process y माइनस फोर के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -4 जो है x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट 3y minus 12 is equal to -4x plus 12. So arranging it, we get 4x plus 3y is equal to 24. This is the equation of line BC, and x coordinate of C का x coordinate फाइंड करना है। यहाँ पे देखें C पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, तो y को हम 0 पुट कर देंगे। y को 0 पुट करेंगे तो C का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y को हम 0 पुट कर रहे हैं तो 4x इज इक्वल टू 24, 4x is equal to 24, and this shows that x is equal to 6. This is the answer. X coordinate of point C is 6. Second part of this question is find the distance AC. अब हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6, 0 और A के कोऑर्डिनेट है -1, 1. So we will use distance formula to find AC. Now AC will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root, giving your answer correct to 3 decimal places. आपने इस इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना है, आपने आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस में। तो दिस विल बिकम 49, 6 plus 1 7, 7 square 49 plus -1 square is 1. दिस इज 50 अंडर रूट। डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है 50 अंडर रूट जो होता है ये 7.071, correct to 3 decimal places. This is the answer.